Hello everyone. Today we are going to discuss a case of 16-year-old unmarried girl which came to our OPD with her uncle and aunt with complaint of pain lower abdomen for 8 to 10 days and bleeding per vagina for 6 to 7 days. Now we planned this girl for the USG whole abdomen and the pelvis. Now you just see the clip of her USG. So this is her USG clip. You can see there is a two structure. एक ऊपर वाला structure नजर आ रहा है और एक ये structure आपको, तो ये एक तो ये वाला, एक और ये structure नजर आ रहा है. You just observe these structures. This is the ovary. Can you just appreciate this is the ovary? Now we are trying to put the flow color Doppler. जब हमने यूट्रस में कलर डोपलर स्टार्ट किया है, कलर डोपलर किया, तो ये जो फ्लो ले रहा ओनली पेरिफेरल पार्ट जो ले रहा वही फ्लो ले रहा. इट मीन्स मायोमेट्रियम इज टेकिंग ओनली द फ्लो. देयर इज नो फ्लो इन द एंडोमेट्रियल कैविटी. नाउ वी विल डिस्कस वन बाय वन. जस्ट सी दिस वन. दिस इज द टिपिकल, कैन यू सी, दिस इज द टिपिकल vesicular pattern. This is the typical vesicular pattern in the endometrial cavity, which also known as the honeycomb appearance and the snowstorm appearance of the uterus, which is the characteristics feature of the complete mole. Now you just see the anechoic cystic lesions. These are the multiple anechoic cystic lesions. Now let's see another one. Now we are focusing on the ovary. You just see this ovary. This ovary is completely filled by the follicular cyst, theca lutein cyst. The cortical part of the ovary is completely replaced by the large multiple cystic lesions. These are the theca lutein cyst, which is due to the effect of the serum beta HCG. Now we have to see the follicles. Now see in the transverse section, you just see the another clip. This is the transverse section of the same patient. Now this part is the uterus and here the two ovaries. Now this is the ovary that is the filled by the multiple theca lutein cyst. Now after seeing these two clips, what is your differential diagnosis? The first diagnosis is the complete H-mole, the second one is the OHSS, third one is the PCOD, and fourth one is the PID. Now why it is H-mole? Because there is the complete vesicular pattern in this and uterine cavity, and the theca lutein cyst is present due to the high level of the beta HCG. Now we have to have an idea, because there is no fetal part in the endometrial cavity, so this is the complete mole, not the partial mole, and the flow is taken only by the myometrium, so there is no fetal part, no cardiac activity or any other fetal circulation in the endometrial cavity. So this is the complete mole, and this is further identified in our histopathological examination. Now the second part, what about the theca lutein cyst? What about the theca lutein cyst? Theca lutein cyst को सर्जरी की नीड है? No, there is no need of the surgical correction of the theca lutein cyst. It will automatically spontaneously resolve after beta HCG becomes normal. Now why it is OHSS? OHS में, because in OHSS there is a multiple follicular development, but when we measure these follicles, there is approximately around 160 to 180 ml each ovary. That is the 18 to 20 times more than the normal ovary, and this patient is unmarried girl, so there is no history of ovarian stimulation in this patient, so there is no chance of OHSS, and the vital of this girl is also stable, and there is no free fluid in the POD. So the free fluid in the POD is the first sign of the OHSS. Now the third one, PCOD. Could it be a PCOD? No, because it couldn't be a PCOD. Why? Because the size of the theca lutein cyst is very large. These are the large theca lutein cysts, approximately around 5 to 6 centimeter each. So in PCOD we have non-dominant follicles, just around 2 to 3 mm follicles होता है जो peripherally arrange होता है और necklace appearance देता है. So this is not a case of PCOD. Why not a case of PID? Why it is PID? PID इसलिए हो सकता है, chances PID. Why there is a kissing ovary. Have you seen the kissing ovary? Both the ovary are kissing each other. That is the typical sign of the PID. Posteriorly ये मिल रही है,
और आपस में टच कर रही है, लेकिन पीआईडी नहीं है बिकॉज देर इज़ नो हिस्ट्री ऑफ लोअर एब्डोमिनल पेन एंड वाइट डिस्चार्ज, सो दिस इज़ नॉट अ केस ऑफ पीआईडी। दोनों टच कर रही है, वो इनका वॉल्यूम ज़्यादा हो गया पोस्टीरियरली, इस वजह से ये टच कर रही है, पीआईडी का नहीं हो सकता है। नाउ व्हाट इज़ द मैनेजमेंट? सो all of you know the management of the complete HMOL, but just I want to focus on some points. First of all, whenever a minor less than 18 years of age comes with you with pregnancy, you just your first thing just inform the police. आपको पुलिस को इन्फॉर्म करना है। नाउ बाकी आपको पता ही है कि जो इसका ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है सक्शन एंड इवैक्यूएशन है। इट इज़ बेटर टू डू सक्शन एंड इवैक्यूएशन विद द USG गाइडेड। हमको पता होता है कि HMOL में डोई फीलिंग होती है, यूट्रस की बहुत सॉफ्ट होता है, उसमें परफोरेशन हो जाता है, लेकिन इस डर के कारण हम उसको इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन करते हैं और कुछ पार्ट्स जो होता है वो रह जाता है। हम परफोरेट नहीं करते हैं, लेकिन HMOL का जो कुछ पार्ट होता है वो अपने को वहाँ पे मिल जाता है। तो हमें इसको USG गाइडेड अगर हम करेंगे तो वो हमें कंप्लीट हम इवैक्यूएशन उसका करेंगे। नाउ द सीरम बीटा HCG फॉलोअप क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मैंने बोला था कि कंप्लीट हो गया पार्शियल होगा, आपको ये लिखना है, HMOL नहीं लिखना है अपने इंप्रेशन में। कंप्लीट जो HMOL होता है उसका जो बीटा HCG फॉलोअप हम करते हैं वो फर्स्ट 7, 14 एंड 21 डेज़ पे करते हैं, और जो पार्शियल HMOL होता है उसका बीटा HCG फॉलोअप जो हम करते हैं आफ्टर प्रोसीजर यानी कि डे 1, डे 7, डे 14 पे करते हैं। और एक एडिशनल HCG फॉलोअप होता है जो पार्शियल मोल में केवल एक बार सिंगल टाइम होता है आफ्टर 1 मंथ नॉर्मल HCG। जब भी हमारा नॉर्मल HCG आता है उसके 1 मंथ बाद में हम सिंगल HCG से देखते हैं कि नॉर्मल है या नहीं है। बट अगर कंप्लीट मोल है तो हमारा जो फॉलोअप होता है वो क्या होता है, 6 टाइम होता है एवरी मंथ फॉर द 6 मंथ आफ्टर 1 मंथ ऑफ द नॉर्मलाइजेशन ऑफ द HCG। तो इस वजह से हमें थोड़ा सा रिपोर्टिंग में बताना होता है कि ये कंप्लीट मोल है कि पार्शियल मोल है। थैंक यू सो मच। इट्स ऑल अबाउट द HMOL। थैंक यू।